जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I hope now the recording is start and with time everybody will join that meeting today. So initially we would like to discuss some of the questions related to the midterm exam. तो थोड़ी सी फीडबैक देंगे जी. हाउ वाज योर मिड टर्म एग्जाम? सो जितने मैंने थोड़े बहुत पेपर्स देखे हैं तो ऐसा लगता है कि आपने खूब रच के नकल की है जी. ठीक है ना? तो खैर मैंने तो अभी ऐसे सरसरी से थोड़े से कुछ के देखे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है उसमें ये कि फ़ाइल के ऊपर ना आपने अपना नाम लिखा है और ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है. तो फाइल्स तो मैंने सारी डाउनलोड कर दी हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसकी फ़ाइल है. तो बहुत कम लोगों ने जो है ना अपने नाम और रोल नंबर्स लिखे हैं उसके अंदर. तो थोड़ी सी नेग्लिजेंस आप लोगों की तरफ से आई फील कि है. एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? यस सर. अच्छा, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है जी. तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, but we already have done some of the basic concepts related to the multiple access technique in wireless communication and especially into the mobile communication systems. तो उसके अंदर हम इसको देख रहे थे कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्या क्या सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो वी डिस्कस ऑलरेडी सम ऑफ द, बट बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस डिटेल I would like to discuss some of the questions or the questions related to the midterm exam. Midterm exam से जो related questions थे. If we see के मैं थोड़ा सा questions को भी शेयर कर दूं. हाँ. अच्छा, questions किसी के पास हैं? If somebody can read the question. चलें जी. The first question was, if the part one of the question number one, if 4 kilohertz voice channel is centered on frequency spectrum at 6 kilohertz and 1 megahertz, then which range of the frequency will be logically narrower? What is this relation with antenna size? Describe it mathematically. Mathematically हमने थोड़ा सा इसको describe करना था. So how it is going to be represented over here? We stated that we have a voice channel which is still is a 4 kilohertz. If it is centered at a 6 kilohertz, or it is going to be centered at a 1 megahertz. So what is, whether this band is narrower or this band is narrower? Actually, what happened that the both bands are same. दोनों के band same है. It means to be 4 kilohertz or it is occupying over here. The same 4 kilohertz is going to be occupying over here as well. But in this band, this is centered at a lower frequency के ऊपर centered है. तो अगर मैं इसका lambda 1 मालूम करूं तो the lambda 1 is the wavelength at a lower frequency and the wavelength at a higher frequency is lambda 1 prime. So it is giving, and lambda 1 is equal to 75 kilometer and lambda 1 prime is going to be a 37.1. So it's a huge difference of the lambda is over here. So because of that huge difference, we need multiple antennas to effectively receive or transmit that particular kind of the signal. But if a same bandwidth is going to be centered at a 1 megahertz, अगर 1 megahertz के ऊपर center हो जाएगा, so what will happen that if you are going to find out lambda 2 and lambda 2 prime at a lower and a higher end, so that will be extremely narrower to one another. एक दूसरे के साथ एक जैसे. So one antenna will work over here. दोनों एक ही एंटीना काम कर जाएगा. So it means to be the right one is said to be a narrower band. It's a logical narrower. Physically, it is remain same. The physical bandwidth of the two signals will be remain same, but only 1 megahertz will be a more narrow because one antenna will work over here. तो ये तो पहला हमारा क्वेश्चन था.
And the second question was, assume we have the three mobile system providers A, B, and C allocate a 30 kilohertz, 20 kilohertz, and 5 megahertz bandwidth respectively to accommodate a single user. Calculate duration of bit rate, and baud rate if BPSK and QPSK modulation technique is used. अगर ये used हो तो ठीक है. So we are going to be describing this. क्वेश्चन अभी बस ये कि आपके पास तीन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि 30 किलो हर्ट्स और 200 किलो हर्ट्स और 1 मेगा हर्ट्स के सिग्नल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. So you are required to find out the bit duration. So simple, the bit duration is this for a BPSK technique modulation के लिए. So are you seeing that screen? Handwritten screen है. And for 30 kilohertz signal for जी सर. BPSK modulation. First of all, you must understand what you mean by a BPSK. Anybody can explain what you mean by a BPSK scheme? You already gone to Bit the phase shift की सर. binary phase shifting. Binary It's said phase to be shift. binary phase shifting. So one phase is representing one bit and the other phase shift is representing the other bit. मसलन if a signal है, एक signal है, उसकी frequency जो है कुछ भी है, let's suppose 30 kilohertz की frequency है, is it right? And the 30 kilohertz signal have gotten, अगर वो zero से start हो रही है या sine wave है, so we stated that it have gotten one phase. And we have got the other signal जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रही है, बिल्कुल ऑपोजिट. सो इट्स सेड टू बी बाइनरी इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड विद द अदर फेज. सो इवेंचुअली द फेज इज गोइंग टू बी शिफ्टेड. अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं है उसका, वरना मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता. यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ द मॉड्यूलेशन इन योर कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये आपकी प्रीरिक्विजिट्स के अंदर मौजूद है जी. जो कम्युनिकेशन सिस्टम का आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है बाइनरी फेज शिफ्टिंग, उसके अंदर मौजूद है. You must have to be understand this mathematical expressions भी आपको इसके आने चाहिए थी. So binary phase shifting. So every bit is going to be representing a one signal, and there is a phase shift. एक phase shift है frequency का, that is going to be representing the other bit. So zero is representing one phase, and one is going to be representing with the other phase. So this is the value. So एक signal आपके एक bit को ही represent कर रहा है. तो बिट ड्यूरेशन कितना हो गया अगर आपके. सो बिट ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 1 आवर 30 किलोहर्ट्ज इज गिव यू 1 आवर 30 मिलीसेकंड का एक बिट हो गया. सो द बिट रेट इज 30 किलो बिट्स पर सेकंड एंड baud rate is equal to 30 kilo symbols per second. SPS है. This is said to be as a baud rate is 30 kilo symbols per second. ठीक है जी. होप ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को. आई डोंट नो कि आपकी अगर कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो फिर देयर विल डेफिनेटली अ प्रॉब्लम्स हियर. फॉर अ 30 किलोहर्ट्ज इफ इट्स अ QPS सिग्नल होगा. QPS सिग्नल ये है कि वी हैव अ 4 फेजेस रादर देन अ 2 फेजेस. BPS के अंदर 2 फेजेस हैं, लेकिन QPS के अंदर वी हैव गॉट टोटल ऑफ द 4 फेजेस. इफ यू सी दैट फिगर, ये फिगर नजर आ रही है जी सबको? ख्याम आपको नजर आ रही है ये फिगर? That Yes, figure is going to be ये representing a, constellation diagram. हाँ ये constellation diagram है और it's a vector representation of your signal. Is it right? Now we have got the 4 options there. अगर मैं जो वो बाइनरी की बात कर रहा था तो उसमें सिर्फ 2 ही आपके पास फेजेस है, एक ये वाला और दूसरा 180 डिग्री का फेज. तो 0 यहाँ हो गया तो 1 यहाँ हो गया, या 1 यहाँ हो गया, 0 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया. सो that was a binary phase shifting. Now you see that every particular vector means to be a one signal element, एक signal element को represent. So one signal element is now going to be representing a 2 bits rather than a 1 bit. ठीक है, एक बिट को नहीं बल्कि 2 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ इट इज अ वेक्टर इज लाइक दिस और इट इज अ वेक्टर ऑफ अ 90 डिग्री ओवर हियर सो इज रिप्रेजेंटिंग 0 1. इफ 180 डिग्री तो 1 0, अगर 270 डिग्री पे है तो दैट वुड बी 1 1. नाउ यू सी दैट कि हमारे पास baud rate क्या है. तो हमारे पास चूंकि 30 किलोहर्ट्ज का बैंड है, सिंबल ड्यूरेशन जो है वो 1 over 30 मिलीसेकंड विच इज सेम. The baud rate is said to be the baud rate is said to be at 30 kilo symbols per second आपको दे रहा है.
30 kilo symbols per second. लेकिन चूंकि every particular symbol is going to be representing a 2 bits, so means to be the bit rate will become double of the baud rate. Baud rate का double हो गया. So it becomes an 60 kilobits per second. So this was the question number one. और उसका part C. The part C, I stated that we have a user at the radius of a cell, and it is now going to be moved towards the base station, a BSC. What will happen? It is going to be moved 1 by 4 times towards the base station, or it is going to be away 3 by 4 of times of the distance from the base station. तो वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया. अब इसका क्या मतलब है कि अगर इट इज नाउ गोइंग टू बी ट्रांसमिटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट तो वो ज्यादा पावर से ट्रांसमिट करेगा, लेकिन अगर वो करीब आ गया तो वो कम पावर से ट्रांसमिट करेगा. व्हाट डज इट मीन टू बी? इस लॉजिक को समझते हैं आप लोग? जी जी सर, वो पोजीशन वाला जो लेक्चर है सर, पोजीशन जैसे होती पावर कम हो जाती है सर. देखें, इसकी लॉजिक ये थी, वी वांट टू बी बेस स्टेशन इज सेड टू बी अ सेंसिटिव डिवाइस. ये एक सेंसिटिव रिसीवर है और इसकी सेंसिटिविटी लेवल है, लेट्स सपोज आई से दैट इज अ -80 dBm की सेंसिटिव, मतलब -80 dBm का सिग्नल इसको मिल जाए तो वो उसकी एक्यूरेसी 99.99% वो सिग्नल को सही रिसीव कर लेता है. अब आप यहाँ पे अगर इसको -50 का सिग्नल भी मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसी लेवल का intelligence इसकी होगी. So it doesn't go in. So it means to be whether you are going to be transmitting from here or you are going to be transmitting from that position, in both position, यहाँ पे जो मिलना चाहिए वो -80 dBm है फॉर इंस्टेंस. तो करीब से कम. जी जी सर, ये इस क्वेश्चन में आपने पेपर के दौरान सर, इस क्वेश्चन में आपने चेंजेस किया था ना सर. ये सर 1/4 था, फिर सर आपने कहा था. सर आपने कहा कि अवे 1/4 था सर. ये 3/4 मैंने कहा कि 1/4 टाइम्स यहाँ से मूव कर गया, लेकिन वो 3/4 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द बेस स्टेशन से. सर क्वेश्चन में तो ये था कि कॉर्नर से 3/4 अवे गया है ना सर, कॉर्नर से, और बेस स्टेशन से 1/4. फिर मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को ना कि यहाँ से ये 1/4 है और यहाँ से ये 3/4 डिस्टेंस. अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, अगर आपने वैसे भी किया है सो इट डजंट मैटर. मैं तो देखूंगा कि आपने कितनी टाइम्स पावर को रिड्यूस किया. अगर 1/4 भी आपने आगे कर दिया सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो यू सी दैट, क्योंकि लॉजिक तो आप वही इस्तेमाल करें ना जो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ. सो देयर इज नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ओवर देयर. ठीक है. Okay, if you are going this, you are at the radius and you are now move 1/4 times towards the base station. आपने थोड़ा सा 1/4, लेकिन base station आप 3/4 के distance पे मौजूद हैं. The receive power is equal to kpt divided by d square के बराबर है. npr is equal to kpt और d square की जगह अब मैं यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस ये d था तो इसका 3/4 टाइम्स आप अब अवे हैं तो 3/4 d square. So if you are going to do this, so it will become as 16.9k transmitting power divided by, it's the line of sight के ऊपर हम वो कर रहे हैं. Now examine that. The receive power at the edge के ऊपर तो ये थी kpt divided by, तो ये वाली तो वही पावर है, लेकिन that is now going to be a 16/9 over here. यहाँ पे 16/9 आ गया. सो ट्रांसमिटिंग पावर को कितना कम कर दें कि ये फैक्टर इसमें से खत्म हो जाए. सो ट्रांसमिटिंग पावर के अगर मैं 9/16 ऑफ द ट्रांसमिट यानी कम कर दूं, सो व्हाट विल हैपन एंड दैट विल बी कैंसल, एंड द सेम पावर जो कि हम इस डिस्टेंस से कर रहे थे, that power will be received over here at the receiver as well. So receiver will be reviewed. So you need to be reduced on 9/16 time of the receive power, transmitting power. 9/16 time of the transmitting power you have to be reduced whenever you move towards the base station by a 1/4 time of the distance आप move कर जाते हैं. So that was the problem over here. So any question regarding this question? बड़ा important question था and we already मैंने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब क्लास के अंदर भी किया था और ये डिज़ाइनिंग के अंदर we will like to use it into the further whenever we do any design the cell. Then we have got a question number 2.
टोटल कवरेज रीजन आपको दिया हुआ था 20,000 स्क्वायर किलोमीटर. You are required to find out for that total coverage region the total number of cells. You are required to find out the total number of cells. लेकिन वहां पे मैंने दिया है you are required to find out the total number of the base station. So as much you have got base station, as much you have एक got the बात है सर, cells. एक ही बात है, एक ही बात है. That's fine. So we stated that the receive power, the sensitivity of the mobile is said to be minus 100 dBm. ये बड़ा important है. The sensitivity of the mobile is said to be minus 100 dBm. So sensitivity मतलब इससे कम का सिग्नल वो नहीं ले सकता. It is not going to be recognized by the mobile. तो जो कम से कम सिग्नल मिले वो डिस्टेंस पे सबसे आखिर में पड़ा होगा. सो दैट विल बी ऑन टू द रेडियस. द डिस्टेंस विल देन बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेल. तो receive power at that particular point, at that from the center of the cell say at that particular point. Now notice that the closing reference distance power is equal to 10 dBm tha, d naught is equal to 10 meter tha, and the path loss exponent we assume to be is said to be 2. सो यू आर रिक्वायर्ड टू, आपके पास टोटल कवरेज रीजन है, तो अगर आपको एक सिंगल सेल का एरिया मिल जाए, सो यू जस्ट हैव टू बी डिवाइडेड विद दिस, you will get the total number of the cells there. So the area of a single cell for a hexagonal shape of that will be equal to a 3 under root 3 divided by or 2.59. ये r है क्या r square है जी? r square है सर. r square है जी, ठीक है. You just have to be correct this, ठीक है. This would be r square, r square. Now what would happen that you are required to put the values over here. Receive power आपको पता है is minus 100 dBm, P naught is equal to 10 dBm, that D naught is equal to 10 divided by R, that would be square. So you just have to be find R from that expression. But notice that you cannot use a dBm into the linear expression. Linear expression के अंदर आप dBm को नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना. What you will have to do, you need to convert minus 100 dBm into milliwatts. So 10 power of minus 100 divided by 10. So that will become 10 power of minus 10 milliwatt. 10 power, ये minus नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला minus गलती से लग गया. So that will be at 10 power of minus 10 milliwatt. And if you are going to be converted at 10 dBm, so again you just use this is 10 power of 10 divided by 10, so it will give you a 10. So this is a 10 milliwatts. You just have to be find R in this expression. अब आपको सिर्फ R को मालूम करना है. Once you have an R, you can find area of a cell. Cell के area को मालूम कर लेंगे, और number of cells you can easily find out by using a 20,000 divided by area of the cell. So the number of cell will be find over here. ठीक हो गया? Okay जी. फिर we stated that the average holding time of a single user is in a cell is said to be 5 minutes, and the frequency of the call by average calls per hour, number of calls per hour is going to be represented over here. Lambda is equal to 3 calls per hour. So the average traffic intensity of the single user is now going to be represented by h lambda, जो already हम express कर चुके हैं, is 5 divided by 60 is equal to 0.255 for length. Grade of service we stated that already having a blocking है, तो Erlang B का फार्मूला लगता है यहाँ पे, Erlang B का. So we will like to use an Erlang B graph to find out this value. So 1% of blocking we mean to be 0.01. We already stated that we have got a total number of customers are 500. So A is equal to UA. We have got the 500 customer, or AU आपके पास है 0.25 divided by 10, तो 125 जो कि उस स्केल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. 125 हमारे स्केल से नंबर ऑफ A की वैल्यू बढ़ जाती है. So it is up to n 100 था. So we just reduce the number of the users there, so it becomes an 75. 75 आपके पास, अब आपके पास A भी मौजूद है, 75 Erlangs, and you have a grade of service as well. So you can find out the number of the channel by using the Erlang B graph से आप उसको find out कर सकते हैं. ठीक है जी? ठीक है सर.
Then we have got a question number 3. You are required to find out the total bandwidth for our users of 800 for the GSM system के लिए GSM system के लिए तो आपको कहा था कि टोटल बैंडविड्थ मालूम कर लें ये सबने किया जी एनीबॉडी जो इस क्वेश्चन को ना समझ सको खयाम सर मैंने किया है लेकिन पता नहीं कैसे किया सर भूल गया सर अच्छा पता नहीं यूसुफ कैसे यूसुफ यूसुफ है यस सर यूसुफ आपने ये लेकिन थोड़ा क्वेश्चन किया था मसला था सर प्रॉब्लम होता है ठीक है जी और यस लैला सर लैला लैला मौजूद है सुमैया सुमैया आर यू हियर ना सर वो नहीं है Can anybody explain this question? Can anybody among you can explain that particular answer? सर ये फर्स्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन मैंने पेपर में नहीं किया था अच्छा हाँ चलो एक्सप्लेन कर दें जी एक्सप्लेन कर दें इसको सर ये 2G के बैंडविड्थ ये 200 के हर्ट्ज होती है ना और सर आपने जी कहा था कि एक स्लॉट में 8 यूज़र आप यूज़ कर सकते हो हाँ फिर हाँ उसके साथ आपने कहा है कि 100 के उसके साथ 200 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर वो यूज़र्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो जी 20 मेगा हर्ट्स के लिए 800 यूज़र हो जाएंगे ना फिर अप लिंक और डाउन लिंक दोनों इसमें कंसिडर होते हैं तो फिर 20 मेगा हर्ट्स और 20 मेगा हर्ट्स दोनों दो दफ़ा जमा करें अप लिंक और डाउन लिंक के लिए तो 40 मेगा हर्ट्स सर आ जाता है फिर ठीक है आप कौन इसके बोल लिए रहे हैं शाफात सर शफात ठीक है जी थैंक यू थोड़ा सा आप इसको जरा सा देखिए जी एवरी पर्टिकुलर नॉलेज इज कनेक्टिंग विद द नेक्स्ट नॉलेज तो जो आगे आने वाले हैं तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं सीखेंगे तो अगला जो पेपर होगा इस दफ़ा तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था किसी ने ओथ के ऊपर भी काम वो नहीं किया बॉदर नहीं किया बस गपशप ही लगाई तो नेक्स्ट पेपर में काफी ठीक ठाक टफ देने वाला हूँ तो यू मस्ट हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन टू दिस नॉलेज इस नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल होगा आगे तो you must have to be very carefully understand whatever we are going to be describing in this lecture okay so total bandwidth you are required to find out the total bandwidth to accommodate 800 user in a GSM system अगर आपके पास GSM सिस्टम है तो एक GSM सिस्टम के अंदर the bandwidth is said to be a 2 kilohertz की bandwidth इस्तेमाल की but within that 2 kilohertz we accommodate total of 8 यूजर यानी एक 2 किलोहर्ट्ज के चैनल से अगर कहीं पे वो मौजूद हो ठीक है नाउ यू सी दैट कि वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ चैनल्स देयर यहाँ पे ना अब ये जो है ये 200 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है अगर कहीं आगे जाके मैंने ठीक है जी यहाँ पे So one channel is basically is composed of a 200 kilohertz, and with one that bandwidth we can accommodate total of 8 users. क्योंकि TDMA technology इस्तेमाल होती है तो time slot is now going to be divided here. तो time slot divide हो जाता है 8 users को accommodate है ये आगे जाके थोड़ा सा मैं और भी explain कर दूंगा. Now examine that we have to accommodate total of 800 यूजर तो फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 100 तो ये 800 यूजर हो जाएंगे तो इस तरफ भी 100 में मल्टीप्लाई करूंगा सो टोटल ऑफ 20,000 किलो हर्ट्स 20,000 किलो हर्ट्स मीन्स टू बी 20 मेगा हर्ट्स का जो कंप्लीट चैनल है दैट इज गोइंग टू बी accommodate 800 यूजर इन जीएसएम सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो सकता है but you see that that is for a one-way communication it's said to be either it is going to be used for the uplink or it is going to be downlink so for accommodating a user for the uplink and downlink simultaneously or a duplex channel so what's happened 20 megahertz is used for the uplink and 20 megahertz are going to be used for the downlink as well so total of the 40 megahertz band is now going to be used to accommodate total of the 800 यूजर 800 यूजर्स को accommodate करने के लिए GSM सिस्टम के अंदर जरूरत होगी
Okay. Then we stated that what can be the maximum bit rate can be achieved for a system in which the received power is said to be a 20 dBm and n is equal to 0 dBm. ठीक है, सबने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जी? जी सर ये किया था। ठीक किया आप लोगों ने इसको? यस सर, ये शैनन फार्मूला है इसमें। शैनन कैपेसिटी का फार्मूला होगा फॉर द जीएसएम सिस्टम के लिए हम कर रहे थे, तो फॉर 200 किलोहर्ट्ज बैंड तो C is equal to B log of 2 1 plus SNR. Is it right? So you see that K SNR is a 20 dBm minus 0 dBm. So it will give you how much is 20 dB. यहाँ पे मैंने dBm नहीं लिखा. This is said to be because it's a ratio. Ratio will cancel the units. Units को cancel कर देते हैं. तो चूंकि यहाँ पे ये लॉगरिथमिक है तो वहाँ पे जो लीनियर में रेशो थी वो माइनस हो जाती है यहाँ पे. So we will have 20 dB is going to be converted here. So 10 power of 20 divided by 10 is equal to 100. So if you are going to put it over there, that value इसको calculate करें, you will get a total capacity in bits per second. ठीक हो गया? So सर मैंने फाइनल वैल्यू नहीं निकाली, फार्मूला लेके ऐसा लिखा, फाइनल वैल्यू नहीं निकाली सर टाइम की वजह से। टाइम ये तो मेरा ख्याल है आधे घंटे का पेपर था ये। हमजन ने वैसे ही मुझे जो है ना जो 3 घंटे सर प्रेशर बहुत था सर, फर्स्ट टाइम था ना सर इस तरह क्वेश्चन सर ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए, फिर सर ये सबमिट भी करना था MS वर्ड में भी सर, फिर वो डालना था सर, तो ये सर वैसे ही प्रेशर बढ़ रहा था सर। ये पेपर अगर मैं आपको लाइव देता ना लाइव, तो मेरे ख्याल में आप में से आधे फेल हो जाते। अभी आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त किए हुए हैं ना कि मैं हैरान हूँ कि आपने ओत का भी कोई जो है ना ख्याल नहीं रखा है जी। मेरा सर ख्याल मैंने था तो तीसरा क्वेश्चन नहीं किया सर, बस नहीं आ रहा था तो नहीं किया सर। टीचर जो है ना जो हमारे DCSE के टीचर वो मुझ पे हंस रहे थे कि ये कौन उबे करता है। मैंने कहा नहीं यार, जो अल्लाह को हासिल नाज़र जान की जो बात करता है तो वो तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन वो टीचरों की बात पे मैंने बिल्कुल उनके साथ इख्तलाफ किया। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन। ये ज़्यादा टेक्निकल, ये ज़्यादा नोट से आप शायद जिसको कॉन्सेप्ट होता तो वही सॉल्व कर दे। तो अब जिसने ये नहीं किया होगा ना तो इसका मतलब है कि उसने नोट से भरपूर जो है ना मदद की है। Okay. Last time what we discussed already about the technique. How many access technique you know about? So initially, what will happen that whenever the solar system basically allow the user to access the channel. So initially, what's happened? The design will basically divide the. सर आपका कैमरा ऑन है? कैमरा ऑन है? यस सर। कब से? कैमरा तो ऑफ है मेरा। सब ऑफ है। अभी ऑफ हो गया सर, अभी ऑफ हो गया, ऑन था पहले। ऑन है, ऑफ हो गया सर, अभी ऑफ हो गया। नो ऑफ सर हो अब गया? ऑफ है। जी सर ऑफ हो गया। तो कितनी देर से ऑन था? सर अभी ऑन हुआ सर। अभी ऑन हुआ। ठीक है ओके। तो इनिशियली व्हाट्स हैपन, वी डू एन जियोग्राफिक डिवीजन। हम सबसे पहले क्या करते हैं? जियोग्राफिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। The huge region is now going to be divided into the small regions, which is basically a composed of upon hexagonal cells, which have gotten a certain radius, and that designing of the dimension of the cell is dependent upon your parameter, the power parameter, another kind of the path loss exponents, another kind of the parameter that you use to design the dimension of that cell. उन cell की dimensions को design किया जाता है। ठीक है जी। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द डिवीजन, फर्स्ट लेवल है डिवीजन की।
And we already know that, हम जानते हैं कि there is a clusters and that is going to be repeated again and again for the frequency reuse pattern. You need a handoff whenever you move from one base station to the other base station, so it is going to be connected with the other base station. फिर हम ये भी जानते हैं कि single cell have uh, gotten multiple access to the users, and that one user will be allocated with the two channels. One is for the uplink and the other is set to for the downlink. Downlink के लिए मौजूद होते हैं. Is it right? ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट टाइम जो है जी, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं. So last class में हमने पढ़ ली थी. So you see that the multiple user, the total bandwidth is going to be allocated to the individual user. It means to be one user if it is going to be occupied a channel, so that is said to be a dedicated voice channel. ये dedicated resources है. This is not a shared resource. ये shared resource नहीं है, but it is said to be a dedicated resource. It means to be whenever you acquire a channel, so other user cannot use that channel. उस channel को use नहीं कर सकता. ठीक है जी. So you see that we have got M1 is going to be used by this user, M2 is going to be used by this user, and MK, for instance, is going to be representing with this users. We have got this in a multiple access techniques. The second level, तो पहले लेवल के ऊपर जो डिवीजन थी वो जियोग्राफिक डिवीजन थी, ठीक है. एंड वंस यू डिड विद द geographic division, you may have resources and that could be divided again. Resource कौन सी है? We have a frequency, we have a time, we have a code, we have a space, and later on we'll come to know about the packet radio as well. ठीक है जी, इसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुके थे जी. Duplex system, one for the uplink, and the one resource is going to be represented for the uplink and the other is going to be represented for the downlink as well. Duplexing हमारे पास क्या होती है कि whenever you do and ये किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें इसको. हयाम का, हयाम अपना माइक ऑफ करो. Then we have a duplexing. Duplexing we mean to be is a two-way communication. There is two kinds. One is said to be half duplex. The other is said to be a full duplex system. In half duplex, what's happened at one time you can either transmit or you are going to be received. So in a full duplex, what's happened? You simultaneously can transmit and you can receive as well. दोनों आप transmit भी कर सकते हैं, receive भी कर सकते हैं. फिर हमारे पास FDD technology है, and we have the TDD technology. We already described about this kind of the technologies there. ठीक है जी. एक चीज, दो तीन चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए. वन इज साइड टू बी FDMA/FDD या TDMA/FDD. These are said to be the technologies. But whenever you call the thing is GSM, so GSM is said to be standard. वो आपके पास standard है, वो standard का नाम है. And in standard, what's happened? Everything is going to be defined. हर चीज defined होती है precisely. So don't mix a technology with the standard. We stated that AMS, American Mobile Phone Systems. So it is said to be a defined standard. ये आपके पास standard है. And what the technology is used in that standard is said to be FDMA, FDD. So you must have to be differentiate between these standards and the technology. So we already have a channel capacity. The channel have some capacity for the available bandwidth and for the available signal to noise ratio. So you can find out. So we already have solved on a question on this as well. इसके ऊपर भी हमने question solve किया हुआ जी. I think we already have explained this as well. इसको भी हमने explain किया हुआ. So you see that the resources are said to be frequency, time and space. हम space में भी हो कर सकते. फिर space को मैंने further explain किया. If you stated that what you mean by phase, so it's said to be x, y, and z. These are three coordinates. ये हमारे पास three coordinates हैं. This is said to be orthogonal. So any other coordinate system you know जो already मैंने आपको बताया था last time? Any Yes, other sir. coordinate Cartesian, system? sir. Cartesian.
कार्टेशियन, स्फेरिकल और एक बता Cylindrical. cylindrical. So cylindrical, the first one is the Cartesian coordinate system. You everyone know about the Cartesian coordinate system. So we have got in a 3 reference axis, and we can draw any kind of the vector by using these three reference vectors. Is it right? तो हम कहते हैं कि सारे स्पेस में हम इससे रिप्रेजेंट, सो वी कैन use and the other kind of the parameters, and this is said to be a cylindrical, and from the cylindrical we can define the space as well. उसको हम cylindrical से भी define कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि इसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया. अगर क्लास होती तो मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके बताता कि how it is going to be represented by using a cylindrical coordinate systems. बल्कि ऐसा कर लेते हैं, you just have to learn about the cylindrical and the spherical coordinate system as an assignment. आप असाइनमेंट का also we will discuss it later on. मैं असाइनमेंट के पोर्शन के अंदर इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा. You just have to see this and then you just have to describe. किसी से भी मैं पूछ लूंगा, and you can expect a questions on in the exam as well using this kind of the coordinate system. You must know these coordinate systems as well. तो as long as these vector are orthogonal, जब तक orthogonal है, you can represent any kind of the vector. किसी भी vector को आप represent कर सकते हैं into the space. ठीक है, ये orthogonal है. क्यों orthogonal है? Every vector, every axis is at a 90 degree with one another, so that it can differentiate the two vectors. दो vectors को differentiate कर सकते हैं. The same concept has been used in the CDMA code के अंदर represent होता है. CDMA code के अंदर. So it have got a close resemblance with the space. Space के साथ उसकी close resemblance है. So that we stated that CDMA का जो axis है वो space के ऊपर हम रखते हैं. Space के ऊपर. Is it right? CDMA, as long as it stated that if vectors और if signals, हम यहाँ पे चूंकि signals की बात करते हैं तो vectors are signals. अगर आपको communication का कोर्स याद हो तो उसमें आपको ये डिस्क्राइब किया होगा कि vectors are not like signals, या signals are not like vectors, but signals are vectors. Signals जो हैं वो vectors ही हैं. ठीक है, और फिर उसकी पूरी प्रूफ भी मौजूद है इन चैप्टर नंबर 2 बीपी लाठी की बुक के अंदर मौजूद है. And what's happened in a signal, we don't have only a 3 dimensions. We have numerous dimensions that the signals can be orthogonal to one another. तो उनके अंदर orthogonality principle रहती है और उसके बहुत सारे vectors हो सकते हैं. यहाँ पे तो सिर्फ 3 है स्पेस के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे vectors हो सकते हैं. And these vectors can be separated by using a codes. By using a codes के उसको separate कर दिया जाता है. Later on we'll come to know that how it is going to be using a code. जब हम CDMA technology पढ़ेंगे so we will have this. इस चीज को explain कर दिया था जी, इस चीज को. Just to refresh yourself that you know about this. If let's suppose you have got a very directional antenna. आपके पास बहुत directional antenna है. What will happen that it will follow or it is going to be radiate a signal from the base station in some specific direction, and it's going to be tracking the user को track कर रहा होता है. So if a user is going to be moved, what will happen that beam of the signal is now going to be moved from one place to other place to the other, and it is basically it is moving with the user के साथ move कर होती है. And it's very interesting how it is going to be track the users will be described if we in the last section of our course that is going to be track the user को track कर रहा है. Now examine that the main lobe of the antenna की जो radiation का main lobe है वो एक तरफ, and we have some small lobes as well. कुछ और small lobes भी होते हैं, but it have gotten a small power for a small regions के लिए होते हैं. Now what will happen? The null of the null, which is the space where there is no beam is available for that antenna, that is said to be a null point. And at that null point, the other signals can be generated and it can pinpoint the other user as well. तो एक का null जो है दूसरे की तरफ होता है, and at that point we have got the other signal which have got a main lobe that will be represented over here. ठीक है जी. तो CDMA that is related with the space के साथ वो relate करता है.
then we will discuss it later on how it is going to be related there. ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था. इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड ऑल दैट फिनोमिना. इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. तो एमएससी बीएससी के दरमियान में क्या है जी, ये कनेक्शन पॉइंट क्या है? फाइबर सर. ये ऑप्टिकल फाइबर है. दैट्स फाइन. देयर इज नो, हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द डेटा रेट एट दैट पर्टिकुलर लिंक. इस लिंक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. But whenever there is a radiate energy and it is going to be propagated in air, what will happen that कि this is the actual bottleneck. अगर आप यहाँ से 20 gigabits per second की रफ्तार से अगर आप यहाँ से दे रहे हैं, स्पीड है, so this is a very limited speed. ये आपके पास नहीं. अगर 220 MB की आपको for instance, so it's a huge difference between that speed and that speed. So this is the actual part. So we are going to design this. इसको डिजाइन करना हमारा मकसद है. We want to achieve that speed that compatible to this speed. इस speed को achieve करने के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे होते हैं. ठीक है जी. So this is the phenomena. We already know that whenever the signal transmitted on air, what will happen that channel will embed its own role into the signal. Signal के अंदर कुछ अपना पैरामीटर डाल देता है. Is it right? वो पैरामीटर क्या है? Is said to be a transfer function h. ठीक है. ये h अगर आपने एक्चुअली आपको पता नहीं, आई डोंट नो कि कम्युनिकेशन का कोर्स आप लोगों ने किस तरह अंडरस्टैंड किया, जो कि 6th सेमेस्टर के अंदर या 5th सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ते हैं. तो दैट h हैव गॉट एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. तो वो h को पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन के अंदर with the mathematical expressions. So y is equal to, if x is going to be transmitted, it have to pass, it is going to be convolved with the h, and the noise is going to be added at the receiver end. Receiver end पे noise, ये वाला noise कौन सा noise है जी? AWK. That noise is now going to be generated through the due to the therm, temperature की वजह से. पहले चाहे it is either a wireless or it is going to be a wired, दोनों के लिए that noise is an important role. So that will be additive word Gaussian noise. So वो किसी भी, ये जो शैनन का फार्मूला है वो वायर या वायरलेस दोनों के लिए एक ही फार्मूला है. So it's not an only for only या वायर्ड या वायरलेस के लिए नहीं. It is equally applicable to all kind of the communications there. Is it right? तो h तो चूंकि इसकी वैल्यू तो 1 से कम ही होगी, क्योंकि h तो कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी लाएगा, इट एटेन्यूएट करेगा सिग्नल को. तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 0.8 है, तो चूंकि ये तो पावर में है, ये तो हम लीनियर के अंदर, तो जब हम इसकी पावर करेंगे तो पावर तो बेसिकली इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है. सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, सो इज अ 0.6. सो इज गोइंग टू बी फैक्टर जो कि x की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इवन मोर लेसर देन 0.64. अगर आपको मल्टी पाथ से सिग्नल मिल रहे हैं तो फिर आप h.h एक और यहाँ h के साथ एक और h भी लगा देंगे. ठीक है. सो दैट विल बी हैविंग अ मल्टी पाथ हियर. सो मल्टी पाथ को भी हम एग्जामिन करेंगे इफ दीज आर दी कंस्ट्रक्टिवली एडेड और इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिवली एडेड. ठीक है. तो इसको हम बड़ा थॉरली लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था. सिग्मा स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था कि दैट इज सेड टू बी अ नॉइज, लेकिन शायद मुझे इसके ऊपर एक और भी थोड़ी सी कोई एक फिगर बना के आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके. वी ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट कि we have enough technologies for the first generation, the second generation, the third generation, the fourth generations. तो इन टेक्नोलॉजीज को अब जो हमने पीछे थोड़ा सा गो थ्रू किया, यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टेक्नोलॉजीज. जब मैं ये ऊपर लिखता हूँ FDM/FDMA/FDD, सो दिस इज द टेक्नोलॉजी यूज इन टू दी फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये इस्तेमाल होती है. Whenever I stated that the FDM/TDMA/FDD, so it's a totally a digital technology. So we basically from first generation to the second generation, we comes totally onto the digital systems के ऊपर आ गए. And again we remain onto the digital system by using a 3G technology.
3G के अंदर जब इंटर होते हैं, जैसे FDM, CDMA, TDD की टेक्नोलॉजीज हैं. Later on, we have now OFDMA technology into the LTE की जो टेक्नोलॉजी है, that is going to be used into the fourth generation के अंदर इस्तेमाल होती है. थोड़ा सा समझने की जरूरत है. Anybody can explain what why I'm writing like this is FDM slash FDMA slash FDD? सर ये डीएमए और टीडीएमए सर ये एंड यूजर के लिए है सर ये. हाँ, लेकिन ये क्या मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहे थे. देखिए ये अब किसी ने अगर पहले एक्सेस को सही नहीं समझा हुआ तो प्लीज इस स्लाइड को बहुत गौर से और समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ऑल इन ऑल व्हाट हैपन, लेट्स सपोज कि अगर आपको एक ऑपरेटिंग कंपनी है, उसने परचेज किया एक स्पेक्ट्रम, कितना 10 मेगाहर्ट्ज का, 10 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, यू फोन लेट्स सपोज इज नाउ गोइंग टू बी परचेज ऑन 10 मेगाहर्ट्ज. नो देन दैट 10 मेगाहर्ट्ज इज नाउ गोइंग टू बी डिवाइड अमंग द यूजर्स में डिवाइड करना है उसने, यानी यूजर्स को एलोकेट करना है बाय विद इन दैट 10 मेगाहर्ट्ज. ये 10 मेगाहर्ट्ज, तो 10 मेगाहर्ट्ज में ज्यादा से ज्यादा कितना, इफ इट इज गोइंग टू बी जीएसएम सिस्टम, अगर जीएसएम सिस्टम होगा तो कितने चैनल बन जाएंगे. तो 10 मेगाहर्ट्ज को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 200 किलोहर्ट्ज का एक चैनल होता है, तो इस पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट अ टोटल नंबर ऑफ द चैनल्स आर अवेलेबल देयर. ठीक है, तो अगर लेट सपोज 100 आ गए, 100 यूजर्स आ गया इससे, तो टोटल 100 यूजर अगर चले, एक चैनल से, एक बैंडविड्थ से इज नाउ गोइंग टू बी अकोमोडेटिंग टोटल ऑफ द 8 users. So total of the 800 user are going to be accommodated by using this. ठीक है, टोटल 800 यूजर. लेकिन क्या एक मोबाइल कंपनी के पास 800 यूजर्स होते हैं? वो तो लाखों में होते हैं, इवन करोड़ों में होते हैं. फिर क्या करेगा हमजा, सोए हुए हो? सर नहीं सर. हाँ, ये टाइम डिवाइड एक फ्रीक्वेंसी है सर, उसको किसी और यूजर्स को देने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं सर. ये 10 मेगाहर्ट्ज है, 10 मेगाहर्ट्ज से वो टोटल एक्टिव यूजर्स जो है 800 यूजर्स को एकोमोडेट कर सकते हैं. अब क्या करेगा, अब तो उसके पास लाखों करोड़ों होते हैं. सर ये 800 कैसे आ गया सर? लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ, आप कैसे, लेट्स सपोज एक कंपनी के पास 10 मेगाहर्ट्ज उसने परचेज किया. यस सर. तो अगर 200 किलोहर्ट्ज जो है वो एक चैनल बनाता है, जैसे जीएसएम के अंदर होता है. यस सर. राइट. तो 10 मेगाहर्ट्ज को 200 किलोहर्ट्ज पे डिवाइड कर दें तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल हो गए. ऐसे ही है ना, एक चैनल 200 किलोहर्ट्ज का है ना, तो 10 मेगाहर्ट्ज को अगर 200 किलोहर्ट्ज पे डिवाइड कर दें तो इतने नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल हो गए. अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो कितना है, मैंने कहा लेट्स सपोज, अब आप कैलकुलेट करें जो भी आया है, तो लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 100 है. ठीक है, 100 चैनल्स आ गए. Yes, तो sir. एक चैनल से जीएसएम के अंदर 8 यूजर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है. इज इट राइट? तो Yes, 100 sir. चैनल्स हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 8, इट विल बिकम टोटल ऑफ द 800 यूजर्स ठीक है सर, समझ कैन बी गया. एकोमोडेटेड. अब पाकिस्तान के अंदर तो यू फोन की एक वक्त में वो तो करोड़ों कस्टमर्स हैं. जी सर. आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? तो इफ लाखों लोग एक्टिव हैं, तो टोटल आप 800 यूजर्स को एकोमोडेट कर रहे हैं, तो इट मींस बी यू आर टोटली लॉस. आप तो यूजर्स को जो है ना, एक्टिव यूजर्स को तो क्या करेगा सर? सर, फ्रीक्वेंसी time slot रीयूज देना- करेंगे सर. जी? टाइम स्लॉट दे देंगे सर. नहीं, टाइम स्लॉट्स तो जीएसएम के अंदर डिफाइंड है ना. 8 टाइम स्लॉट से तो ज्यादा आप 8 नहीं ही कर सकते. 8 ही होते हैं, 8 से ज्यादा तो नहीं. दिस इज टू बी द स्टैंडर्ड. Standard is a predefined, the bit duration, the slot duration, everything is now going to be defined in that standard. उस standard के अंदर define होते हैं. मतलब अगर आपने 8 टाइम slot का frame बनाना है तो frame will be remain at an 8 time slots. So you cannot change there. Is it right? वो तो चूंकि standard है ना. जी जी. यस सर, यस सर. सर बेसिकली सर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे सर. Frequency reuse phenomena, ये तो एक क्लस्टर को देते हैं ना. तो वी आर गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. 800 को रिपीट करते रहे तो लाखों में चला जाएगा. इज इट राइट? सो द फ्रीक्वेंसी रीयूज फिनोमिना इज देयर बिकॉज वी आर गोइंग टू use that frequency
and we are going to be extend the cluster again and again cluster को extend करें. We are going to number of the user are going to be accommodated into the large in numbers. Is it right? तो ये आपके पास हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फर्स्ट लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. पहले तो हमने जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की, देन द फर्स्ट इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. What does it mean to be 10 मेगाहर्ट्ज का परचेज किया, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने डिवाइड किया इनटू 200 किलोहर्ट्ज के मैंने चैनल्स बना दिए. So the first level is said to be FDM, is a frequency division multiplexing. ये वाली फ्रीक्वेंसी अभी हमने एंड यूजर को नहीं दी है. So it's said to be that at the very first level you have to do an FDM technology, frequency division multiplexing आपने की. तो पहले आपने जियोग्राफिक डिवीजन की, नाउ यू आर गोइंग टू बी डिवाइड द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम among द चैनल्स. आपने उसके चैनल्स बना दिए. ठीक है. फिर आपने क्या किया कि एफडीएम में इसी चैनल का एक्सेस दे दिया यूजर को, एक्सेस दे दिया यूजिंग एन एफडीएमए टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स सपोज अब तो 1G के अंदर तो 30 जो 1G के अंदर एक है एम्प्स एंड द अदर इज सेड टू बी एन एम्प्स नैरो बैंड एम्प्स. दो किस्म के एम्प्स है ना, वन इज सेड टू बी एम्प्स, द अदर इज सेड टू बी नैरो बैंड एम्प्स. एम्प्स जो होता था, एम्प्स इज यूजिंग अ 30 किलोहर्ट्ज का चैनल एलोकेट करता था यूजर को, और नैरो बैंड एम्प आर यूजिंग अ 10 किलोहर्ट्ज का चैनल फॉर अ सिंगल यूजर को एलोकेट करते थे. This is very, very important. You must understand how the bandwidth is going to be affecting the efficiency of the system. Bandwidth, जब मैं 30 किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, जब मैं 10 किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, whenever I am going to be using in a 200 kilohertz or I am going to be using in a 1 megahertz, तो आपको पता लगना चाहिए कि इन bandwidths का क्या इफेक्ट होता है into the system. What basic achievements you are going to do with the bandwidth के साथ आप कौन सी चीज अचीव करने जा रहे होते हैं, and how the quality is going to be affected by using that bandwidth. तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों की इसके अंदर. ठीक है जी. Then what's happened, that channel is now going to be given an access of the channel to the user, and user को दे दिया जाता है. FDD से क्या मुराद होगा जी? FDD यानी कि ये अगर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है फॉर द अपलिंक, so that will not be used for the downlink के लिए नहीं, downlink के लिए फिर अलग से फ्रीक्वेंसी यूज होगी. So it's said to be FDD. So once the channel has been allocated to the user, and that will then be for the duplex system we use and frequency division duplexing कर देते हैं. ठीक है जी. तो ये टेक्नोलॉजी आपको FDM is the basic technology. Again we are going to be using an FDM into the 2G के अंदर भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं. उधर क्या किया हमने ये किया कि अब हमने वही फ्रीक्वेंसी डिवीजन की, but the width of the channel is now over here is said to be 200 kilohertz. 200 kilohertz का चैनल हमने रख दिया, and that 200 kilohertz से हमने 8 users को accommodate कर लिया. So at the first stage the FDM अब 8 यूजर को एकोमोडेट करने के लिए हमने टाइम स्लॉट्स एलोकेट किए. टाइम स्लॉट्स, इट मींस टू बी द यूजर वन इज गोइंग टू बी एकोमोडेटेड इन दिस टाइम स्लॉट, एंड यू सी दैट in a complete frame what's happened, the first time slot is allocated to the user one. In the second frame, what's happened, the same first time slot is going to be allocated to the user one again. अब यहाँ पे वो 200 किलो हर्ट्ज का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पर भी वो 200 के उसी 200 किलो हर्ट्ज का, लेकिन ये जो 7 टाइम स्लॉट्स हैं इसके बाद के, वो यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, 5 एंड अप टू 8 तक वो एलोकेट, यानी 7 यूजर्स को फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट्स के अंदर एलोकेट किया जाता है. इज इट राइट? एंड दे आर गोइंग टू बी यूजिंग द सेम 200 किलो हर्ट्ज. लेकिन टाइम तो जी एफडीएम सर ये जरा बता दें एफडीएम में क्या हुआ, इसको डिवाइड किया एफडीएम के अंदर हमने सबसे पहले किया कि 10 मेगाहर्ट्ज का हमारे टोटल स्पेक्ट्रम हमने परचेज की थी, तो हमने उसको पहले डिवाइड किया छोटे छोटे चंक्स के अंदर. उसको हमने कहा कि 200 किलोहर्ट्ज 200, तो ये एफडीएम हमने कर दिया. एफडीएम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया. अब ये वाली फ्रीक्वेंसी
जो है वो हमने 8 यूजर को एकोमोडेट किया, उसके अंदर एक के अंदर 8 यूजर को एकोमोडेट किया. So 8 user accommodation into the one time frame, एक frame के अंदर, and one small time duration is said to be a one time slot. उसको हम one time slot कहते हैं. And every particular time slot is going to be allocated to a different user. Different user को allocate कर दिया जाता. So this is a complete frame of the 8 slots. Now you see that the first time slot is going to be allocated to one user. The same user is now going to be allocated in the first time slot of the next frame. Next frame के अंदर वो उसको allocate कर दिया. तो ये इसकी इंफॉर्मेशन इस तरह हर एक फ्रेम के अंदर डिसकंटिन्यूसली आती रहती है, इज इट राइट? यानी कि आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी तो 7 टाइम स्लॉट आप कुछ भी नहीं, आप आइडल बैठे हुए हैं. Then what's happening in the next frame? You sending or receiving the next information, and then again you are going to be in idle condition for the next 7 time slots, because these time slots are for the other users. तो सर ये आपने 200 के, ये वही 200 के है ना सर, वही चैनल है? वही चैनल है जी. Is it right? ठीक है सर. आपने क्या किया? You are going to be dividing into the time के अंदर आपने, तो वो जो सेकंड रिसोर्स है, जो कि मैं कह रहा था फ्रीक्वेंसी का एक रिसोर्स है, वी हैव ना टाइम का एक रिसोर्स है. तो मैंने अब लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक लफ्ज है, तो वो हो सकता है कि ये जो पहला वाला फ्रेम है उसकी पहली टाइम स्लॉट के अंदर ट्रांसमिट हो जाए आपसे. आप जो है हो सकता है कि नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आपके पास पहुंच जाए. इज इट राइट? दरमियान में आपको जो है ना गैप मिलेगा विद 7, लेकिन वो सीमलेसली, बिकॉज द डेटा रेट इज मच फास्टर, कि आपको ये नहीं महसूस होगा. इट इज सीमलेसली इज गोइंग टू बी रिसीव द इंफॉर्मेशन. There will be, although this is a discontinuous communication, but it is a seamlessly, or it is not going to be noticed by the transmitter or receiver. In transmitter or receiver को पता भी नहीं है, क्योंकि ये तो माइक्रोसेकंड्स के अंदर होता है जी. डिसकंटिन्यूअस क्या मुराद है? Discontinuous means to be you just have sent your information there, and then for the 7 time slot you are remain idle. आपने फिर कुछ नहीं भेजा. फिर नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आपने अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पहले स्लॉट के अंदर भेजी, और फिर आप 7 के लिए, तो 7 टाइम स्लॉट्स यू विल बी रिमेन आइडल. So it means you are going to sending your information discontinuously. Is it right? So we have this. सर एक फ्रेम का ड्यूरेशन कितना होता है? दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड. अब ये तो निटी गिटी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मुझे तो सारी याद नहीं है. यू कैन सी दी नेटवर्किंग पोर्शन के अंदर इसके वो डेटा शीट्स देख सकते हैं कि इसका पूरी ड्यूरेशन कितनी है. इसमें हम तो मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊं, वो तो याद भी नहीं रहती हैं. तो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट यू जस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड कि इट हैव गॉट टोटल ऑफ द 8 टाइम स्लॉट्स, एंड एवरी टाइम स्लॉट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है. ठीक है? फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं उसने सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, एंड समथिंग लाइक दिस, कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसमें प्रीएम्बल क्या है, उसमें ट्रेल बिट्स क्या है. So all is now going to be defined very precisely into the standard. GSM is a standard. Again and again I am saying to you this. ठीक हो गया जी? तो ठीक है सर ये सारा FDMA था सर, FDM था सर. ये मैं TDMM का, मैं टाइम स्लॉट्स की बात कर रहा हूँ ना, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. FDM को तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना आप लोगों को. ठीक है सर, ये स्लॉट TDMA था सर. ये इससे पहले ये 10 मेगाहर्ट्ज वाला सर FDM था सर. मैं FDMA में टाइम को नहीं डिस्कस करूंगा. ठीक है? So I am going to be discussing, or is going to be exploring a time into the TDMA system, because the time division multiple access. So we are going to be using a second resource into that is a time into the TDMA or 2G technology GSM के अंदर मौजूद है. ठीक हो गया? That's fine. Then you see that we have got the third technology or 3G के अंदर, and it's a CDMA 2000. CDMA 2000 is a 3G technology, and again CDMA 2000 is a standard. ये आपके पास standard है, and the technology is going to be using over there. Again you see that again
into the first level we have got a frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing, is it right? Or CDMA is a code division multiple access is used to access the end user. ये end user को access कराने के लिए यूज हुआ है. CDMA के अंदर हम काफी डिटेल आगे आके पढ़ने वाले हैं इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर. You will come to know that. But the difference is जो difference मैं यहाँ explain करना चाहता हूँ इस जगह पे, वो FDD has been now going to be replaced to TDD. Is the time division duplexing. Time division duplexing. ठीक है? You see that in TDMA in the second generation FDD के टेक्नोलॉजी यानी कि एक frequency spectrum का इस्तेमाल हो रहा है for the uplink, the other is now going to be using for the downlink. Downlink के लिए इस्तेमाल. So FDD की टेक्नोलॉजी हो रही है. यानी कि एक ही यूजर को हम अपलिंक और डाउनलिंक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड से एकोमोडेट कर रहे हैं. ठीक है. सो इट मींस वो जो मैं आपको कह रहा था कि 20 मेगाहर्ट्ज जो क्वेश्चन के अंदर भी दिया था, 20 मेगाहर्ट्ज फॉर द अपलिंक चाहिए और 20 मेगाहर्ट्ज फॉर द डाउनलिंक. सो 800 यूजर आर गोइंग टू बी, सो टोटल ऑफ द 40 megahertz band is now going to be used to accommodate the 800 users. We already explained into the questions वो जो अभी मैंने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया आपको. नाउ TDD को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. This is a base station, this is a mobile. TD is said to be time division duplexing. At one time, the mobile is transmitting, the base station is going to be receiving. And at the other time, whenever the base station is transmitting, the mobile station is now going to be receiving. आपका receiving होगा. Now notice that, let's suppose the duration of the information from the mobile is for 1 millisecond. 1 millisecond के लिए आपका mobile transmit करता है. So at that point of time, the base station is now going to be receive करेगा. There must be some separation duration as well. जो switching के अंदर because the DSP kits has been used into the mobile or base stations के अंदर हमारे पास sophisticated किस्म का electronics लगा होता है. What will happen that there is a switching mechanism, electronic switching mechanism that will be used जैसे BJT का bipolar junction transistors का for the switching purpose के लिए इस्तेमाल होता है. यानी कि whenever it is going to be transmitting and whenever it is switches to the receiving, so there is must be an electronic switch over there कि वो receiver पे आ जाए. ठीक है जी. तो this is a time, ये time slot है. This is said to be a time slot. So in that time slot, it is going to be transmitting. In that time slot, it is now going to be receiving. To TDD है. This is said to be, and the frequency is same. Frequency आपके पास same है. Now there is a potential problem over here. When a mobile is transmitting, what will happen? It is going to be receiving the base station. Base station receive कर रहा है. लेकिन at the same time, whenever it is going to be transmitting, वो किसी reflector के साथ लग के वापस आ रहा है. The signal is going to be, let's suppose we have now very good window panes that basically is going to be reflecting your signal, and the totally signal is now going to be reflected from that reflector. So this reflector say okay वो वापस आ रहा है. And it took total of a 1 millisecond से ज़्यादा का time उसने ले लिया. Whenever it takes a wonder, so what's happened at that point of time, whenever it is going to be receiving a signal from the base station, is also going to be receiving the reflection of the transmitting its own signal as well. अपने signal की भी वो reflection आ रही है. So all in all, whenever you are going to be designing a TDD technology, you will have to take care of that kind of the problems there. तो जब भी ये स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करके एंड दैट इज गोइंग टू बी डिजाइन अकॉर्डिंगली. इज इट राइट? इस प्रॉब्लम को आप समझ गए जी? एनीबॉडी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप समझें क्या? नहीं सर, नहीं समझे. ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू बी डिस्क्राइबिंग अगेन. अब जरा से मैं आपको आसान उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ. यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर देयर. ठीक है? मोबाइल ने क्या करना है कि ट्रांसमिट करना है, रिसीव. यानी जिस वक्त वो ट्रांसमिट कर रहा है तो उस वक्त वो रिसीव नहीं कर रहा. तो जिस वक्त वो रिसीव कर रहा है उस वक्त ट्रांसमिट नहीं कर रहा. ठीक है? इसकी टाइम की डिवीजन हो जाए जिसको हम कहते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग.
अब देखें मोबाइल से जब ट्रांसमिट करते हैं तो बेस स्टेशन को जाता है तो ये हम कहते हैं अपलिंक, जब बेस स्टेशन से मोबाइल को आता है तो हम कहते हैं डाउनलिंक। सो मीन्स जब ये टाइम 1 मिली सेकेंड का एक टाइम स्लॉट है, एक टाइम स्लॉट है जिसमें ये ट्रांसमिट करता है और बेस स्टेशन रिसीव करता है, और दूसरे मिली सेकेंड के अंदर बेस स्टेशन ट्रांसमिट करता है और मोबाइल रिसीव करता है। इज इट राइट? यहाँ पे एक बड़ा स्विचिंग मैकेनिज्म, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। मैकेनिकल स्विच तो हो नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये तो मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर के बात है। सो व्हाट वुड हैपन दैट कि जब 1 मिली सेकेंड गुजरते हैं तो इट विल बी स्विच इन टू द रिसीविंग मोड, रिसीविंग मोड के अंदर आ जाता है, तो वो ये कंटिन्यूसली कर रहा होता है। सो व्हाट्स हैपेंड, द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इज नाउ, सो दिस इज सेड टू बी डुप्लेक्सिंग, ये डुप्लेक्सिंग कर रहा होता है। अब हुआ ये कि अब मैं एक प्रॉब्लम आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, वो ये था कि इसने जब ट्रांसमिट किया तो बेस स्टेशन ने उसी वक्त रिसीव किया उसको, लेकिन ये तो ऑमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन करता है ना। व्हाट हैपेंड कि कुछ वेव्स इसकी किसी जगह से टकरा कर वापस आ गई, और जब वो वापस आई तो 1 मिली सेकेंड का टाइम गुजरा हुआ था। तो क्या हुआ कि उस वक्त तो बेस स्टेशन से ये रिसीव कर रहा होगा, लेकिन इसको इधर जब उसने ट्रांसमिट किया था उसकी इको भी मिल रही है। व्हाट हैपेंड, दैट विल बी द कॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ओवर हियर, इसको इंटरफेरेंस दे रही होगी, क्योंकि वो तो उस वक्त रिसीव कर रहा था 1 मिली सेकेंड, ये जाने आने में 1 मिली सेकेंड उसने उसके लग गए। सो व्हाट विल हैपन दैट दैट इज नाउ गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर इट्स ओन सिग्नल, अपने सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस करना। इज इट? तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स को भी जहन में रखा जाता है व्हेन एवर इट इज गोइंग टू बी डिजाइनिंग द टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग एंड अदर काइंड ऑफ द डुप्लेक्सिंग सिस्टम्स। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है जी, अब जरा से इसको जल्दी जल्दी से गुजर जाते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, FDMA is a loss axis is given to the end user is a frequency, frequency के ऊपर दिए गए। You see that we have got the total information. If you move into the frequency or the time axis or going to the space, तो जिस dimension में you are going to be moved, so the volume of the information is now going to be increased, तो ज़्यादा बड़ा volume को carry करेंगे आप। Now in this system, FDMA AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, पहले ये अमेरिकन मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स कहलाते थे, लेकिन अब वो एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जब अमेरिका से बाहर निकली है टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ स्टेटेड एज एन एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम into the frequency band, frequency band के ऊपर what's happened is the small slices over here, and each particular band is now going to be allocated a single user, single user को allocate कर दिया जाता है। Is it right? So we can accommodate into this band, इस band के अंदर हम इसको accommodate कर सकते हैं। You see that into the time is constant for all. It means to be we are not going to have a variation in time, and we don't have a variation into the space as well. So it's a purely FDMA. So one particular frequency band has been allocated a unique frequency band or channel allocated to the each user. The allocation is done on, आप जब डिमांड करते हैं, so that the channel has been allocated to you, आपको allocate कर दिया जाता है। One channel carries one phone circuit. What does it mean to be? मतलब एक अलग वो चिप या रिसीवर लगा होगा हर एक चैनल। हमजा आपकी आवाज में बहुत शोर था, सो मैंने तो अंडरस्टैंड नहीं किया आपने क्या कहा। One channel carries one phone circuit. We mean to be phone circuit whenever we said to be switching circuit, जब हम circuit switching की बात करते हैं। So the dedicated channel has been allocated to you. आप बोलें या ना बोलें, आपको channel allocate कर दिया गया है, and this is a dedicated channel for you. तो whenever you have got the idle speeches, whenever you don't talk, आप नहीं बोलते, तो उस वक्त आपका
जो आप बैंडविड्थ को वेस्ट कर रहे होते हैं, सो दिस इज द लॉस ऑफ द स्पेस, सो दिस इज अ ड्रॉबैक ओवर हियर. The bandwidth of a channel are relatively narrow. For example, is a 30 kilohertz. Synchronous transmission with low overheads is said to be, आपको इसके अंदर overheads की जरूरत नहीं पड़ती. So whenever you move towards a digital communication system, what will happen that you need to have overheads. A lot of the overheads will be included over there. वहाँ पे यहाँ पे आपको जो है और overheads जो हैं वो बहुत low होते हैं. So it's a very simplest technology and you can see that. अच्छा, इन दो स्लाइड्स को आप खुद पढ़ लें. इसके अंदर यू सी दैट कि कौन कौन से रेंजेस हमने एलोकेट किए हैं एम्प्स के अंदर. ये ज़्यादा याद भी नहीं रहती हैं, आप जस्ट इसको एक नज़र देख लें. यू डोंट हैव टू बी रिमेंबर दिस काइंड ऑफ दी पैरामीटर. जैसे वो कह रहा था कि जी स्लॉट्स कितनी ड्यूरेशन की होती हैं, तो वो याद रखना, क्योंकि तो काफ़ी डेटा शीट के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं. So there is no need to be remembering this, but you must have to understand the technologies क्या आप technologies का इस्तेमाल कर रहे हैं. So these are the ranges of the frequency that has been used into the amps for the uplink and the downlink के अंदर. तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं. There is no need to be just remember this. इसको remember करने की जरूरत नहीं है. FDMA features, if you are going to be described, is a higher cell side system cost देन TDMA. इसके सेल साइड ज़्यादा जो होते हैं वो हाई होते हैं, और ये इसकी कॉस्ट भी TDMA से ज़्यादा है. हाई कॉस्ट ऑफ बैंड पास फिल्टर बिकॉज वी नीड एंड अ वेरी टाइट काइंड ऑफ फिल्टरिंग दिया. बड़ी टाइट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म के फिल्टर्स. व्हाट डज इट मीन टू बी? यू सी दैट दिस इज अ कंप्लीट बैंड दैट हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द यूजर के दरमियान में डिवाइड की गई है. सो इफ यू आर वर्किंग इन दैट फ्रीक्वेंसी, अगर आपका मोबाइल जो है वो इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है, एंड इफ योर फिल्टर इज नॉट वेरी गुड, व्हाट वुड हैपन दैट कि वो कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है. what will happen, that will become a source of interference to the other user, and this kind is said to be adjacent channel, jo ki already we have discussed into the before midterm, and it's basically is going to be deteriorate the other signal, the other channel ko occupy kar raha hai. So that leakage is not good in a frequency division multiple axis. What will happen that this that will be suffer a lot, that kind of the user will be suffer a lot into the which is going to be using an FDMA technology. So tight RF filtering is used, mitigating adjacent channel interference को mitigate करना पड़ता है. Narrow band system है, because it's a narrow band system, so that a very strong flat fading is now going to be received with this narrow band system. What do you mean by narrow band? Why it is said to be a narrow band as compared to the other standards? जी खयाम, सुमैया है जी? फ्रीक्वेंसी जी जी बोलें. सर ये जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है सर, इसके हिसाब से वो सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो मतलब बराबर होती है. देखिए इसका we mean to be the bandwidth is a 30 kilohertz. It means to be from the lower frequency to the higher frequency. What will happen that there is a bandwidth of a 30 kilohertz. If you are having a narrow amps or narrow band amps जो है, so what happened that कि उसकी तो 10 kilohertz, it means to be the 1/3 of the amps. 1/3 of the amps. So it's a 10 kilohertz. So it's where the band is now going to be received. For instance, some fading effect has been occurred. What will happen that कि यहाँ से एक fading effect आया तो उसने इतने portion of the signal को ज़ाया कर दिया. अब आपके पास सिर्फ ये वाला और ये वाला portion रह गया, and that has been lost there. You lost there. What will happen that कि there will be hardly recognizable because of that component, जो कि रह गए हैं components, उनको recognize करना, because almost 50% or more than 50% signal has been lost there. अगर ये ज्यादा 200 किलोहर्ट्ज का बैंड होता तो यही फेडिंग आनी थी. इस फेडिंग की वजह से
you see that portion is going to be lost. So a large portion of the frequency or the terms are going to be received accurately. तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे 20% इंफॉर्मेशन को लॉस करते हैं, व्हाट विल हैपन, यू रिमेन इंटैक्ट विद द 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज देयर, so that the larger band signal is is less affected by that fading effect. फेडिंग इफेक्ट उसके ऊपर कम होता है, द सेम फेडिंग इफेक्ट नैरो बैंड्स को ज्यादा सेवियरली डेटोरिएट करता है, इज इट? फिर सर सो नेहरू बैंड को नेहरू करना सर ये कोई अच्छा काम नहीं है। नहीं है ना, ये पहली टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल। सो एज द टेक्नोलॉजीज ग्रोज व्हाट्स हैपन, होता ये है कि यू कैन नॉट इवेंचुअली इनहांस द स्पीड, बिकॉज अब आप देखें इन 1960s के अंदर ओ एफ डी एम ए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, जो एल टी की टेक्नोलॉजी है, एल टी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एल टी आपने नाम सुना हुआ है ना जी मोबाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ओ एफ डी एम ए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें सब कैरियर्स बनाए जाते हैं, वो कब बनाई गई? इन 1960s के अंदर, बट इट्स नेवर यूज टिल द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से पहले नहीं इस्तेमाल हो रही, इज इट? वजह क्या है? वो उस वक्त इस्तेमाल कर देते हैं। वो होता ये है क्योंकि आपकी डीएसपी किट्स जो हैं दैट कुड नॉट सपोर्ट द टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए जो डीएसपी की स्पीड है, जो किट्स हैं, तो उनकी जो स्पीड है, जो आईसीज हैं, उनकी स्पीड जो है उसको इन्हांस करना पड़ता है। तो जब तक वो बनती हैं तो उस टेक्नोलॉजी फिर इस काबिल हो जाती है कि वो उसको रन कर सके एक मशीन, ठीक है। सो दैट ये स्पीड अब जो नैरो बैंड्स हैं, तो वो उस वक्त तक है जब टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की, एंड वेन एवर इट इज प्रोग्रेसिव and it comes having a capability to use the already developed concept, so then it is now going to be implemented onto the DSP kits, फिर वो DSP kits के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। Are you understanding my logic? Now let's suppose अगर हम देखें कि how many transistors can be fabricated onto the single chip, and what is the computational power of the ICs, so it is basically that growth is a exponential growth। वो आपके पास exponential growth है, ठीक है। अगर आप एक ग्राफ बनाएं एक्स वाई के ऊपर, एंड यू सी दैट कि आप एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज करें, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, सो यू सी दैट कि पिछली 2 सदियों में जो है, या आप पिछले 1000 साल में, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोग्रेस देखें तो बहुत थोड़ी सी, जस्ट नथिंग, थोड़ी प्रोग्रेस। लेकिन आप जब आप पिछली सदी के अंदर देखते हैं, सो देयर इज अ एनॉर्मस इंक्रीज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशंस के ऊपर बहुत जबरदस्त इंक्रीज आया। सो वी हैव गॉट एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज into the टेक्नोलॉजी। computational power of the DSP kits. So that's why we have an technology, but we cannot be implemented onto because the system is not going to be is not supporting the technologies को उस वक्त तक support नहीं कर सकती थी. So later on it become possible to support this. So you see that the same fading effect will affect more the narrow band as compared to a larger band. Wide band को इतना नहीं affect करती जितने क्या आप इस logic को समझ गए हैं जी. So the lot of the information still is intact, even though we have got the some of the portion of the information is lost there. ठीक हो गया, ये हम पर बैठे. Then you see that the number of channels that can be simultaneously supported n is equal to bt plus minus 2 b guard divided by bc. bt is said to be a total available spectrum. Is a total available spectrum. यानी कि कितनी आपको बैंड, लार्जर बैंड आपको दी गई है. And what do you mean by the guard bands? Anybody? Okay. Now if you see this figure, you see that कि हमने FDM किया, ये total spectrum था हमारे पास. Total spectrum was said to be a total bandwidth is allocated.
that is now going to be divided among the small channels. Small channels के छोटे chunks बना दिए. What's happened between the channels? What will happen that there is a guard band in between, because as we have a problem of the leakages over there, it may disturb the other. तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा distance इसके अंदर बढ़ा देते हैं. And what is the separation between this is said to be a guard band. So is a half separation from this side and half separation from this side is said to be guard bands. So that it should not be overlap with one another. यूज के साथ overlap ना कर दें. Now this is total bandwidth. ये आपके पास total bandwidth है. If you are going to be total bandwidth से in guard bands को minus कर दें, so one is on this side, the one on the other side. So total bandwidth minus two guard bands divided by the band occupied by a single channel. So the total number of channel you will be getting. ठीक है, सारे आपको total number of bandwidth आपको मिल जाएगी जो users के लिए इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, इस बात को समझ सकें आप. You see that we. अच्छा, फिर से देखें जी. The users, this is a total bandwidth allocated to the operator ने purchase किया. Yes sir. उसने बैंड्स बनाए, थोड़े छोटे छोटे बैंड्स बनाए. Yes उन sir. बैंड्स के दरमियान में कुछ गैप रखा. गैप इसलिए रखा, दिस इज सेड टू बी गार्ड बैंड, ताकि इस किस्म की लीकेज से दूसरा चैनल इफेक्ट ना हो. इज इट राइट? ठीक है सर. तो अब आधा गार्ड बैंड यहाँ रखा, आधा गार्ड बैंड यहाँ रखा. इज इट गार्ड, GUARD, गार्ड. गार्ड बैंड हैज बीन देयर. तो अगर ये टोटल बैंडविड्थ से इन गार्ड बैंड की को हटा दें, गार्ड बैंड को हटा दें, तो हमें टोटल बैंडविड्थ मिल जाएगा जो कि यूजर को एलोकेट किया गया. ये गार्ड बैंड तो इज नॉट एन अ पार्ट ऑफ द यूजर एलोकेशन. तो टोटल बैंडविड्थ इफ इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टिंग यूजर, ये जो गार्ड बैंड्स को बीच में से निकाल दें, so that will be a total bandwidth is allocated to the users, number of users. और फिर एक यूजर के बैंडविड्थ को डिवाइड कर दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ से मिलेंगे. टोटल नंबर ऑफ चैनल्स विल बी अवेलेबल चैनल्स, यू कैन बी फाइंड इट फ्रॉम हियर. सर ये हाफ गार्ड बैंड हटा दे तो फिर मतलब ये आधा तो एक के दरमियान आता है ना, आधा दूसरे के. यार देखो, आसान आपको मैं बताता हूँ. लेट्स सपोज कि आपके पास 30 किलोहर्ट्ज या 200 किलोहर्ट्ज का बैंड है. इज इट राइट? और दरमियान में 10 हर्ट्ज मैंने जो है ना, बस वैसे ही मैंने दरमियान में दीवार मार दी. जैसे दो घरों के दरमियान में दीवार होती है ना. जी सर. कि कोई इधर से उधर ना झांके, उधर से इधर ना झांके. ऐसा होता है ना? ठीक होता है. तो ये जो दीवार का जो रीजन है उसको निकाल दें. मसलन अगर ये 200 किलो, 200 किलो, 200 किलो, 200 किलो, ये कितने हो गए? 800 किलोहर्ट्ज. 800 किलोहर्ट्ज. तो ये सारा जो बैंड है, लेकिन दिया कितना था कि 10 हर्ट्ज इस तरफ इसके और इसके इस तरफ 10 हर्ट्ज. ठीक है, तो 20 हर्ट्ज यहाँ पे, 20 हर्ट्ज यहाँ पे, 20 हर्ट्ज यहाँ पे, और यहाँ पे 10, तो 100 हर्ट्ज एक्स्ट्रा थे. That has been used for the guard bands. ठीक है जी. तो हमने ये किया कि टोटल बैंडविड्थ से गार्ड बैंड को हमने हटा दिया, तो वी हैव गॉट टोटल बैंडविड्थ इज एलोकेटेड टू द यूजर एज वेल, जो कि यूजर के लिए इस्तेमाल हो रही है. अब लेट्स सपोज कि ये कितना था? 800 किलोहर्ट्ज था. 800 किलोहर्ट्ज था. 800 किलोहर्ट्ज ऊपर आ गया. 800 किलोहर्ट्ज को डिवाइड करूं एक यूजर की बैंडविड्थ पे 200 किलोहर्ट्ज. 800 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 200 किलोहर्ट्ज, व्हाट विल बी द आंसर? 4 चैनल्स. 4 चैनल्स आ गया, 4 यूजर्स आ गए. ये बताना चाह रहा था. सो नंबर ऑफ द चैनल यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. इज इट राइट? यस. Okay. Then काफी नहीं है सर. काफी नहीं है सर. टाइम भी बना. चलिए ठीक है. ओके जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी एक क्लास मिस हो चुकी है, तो उसके भी कोई हम फिर एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है? ओके सर. ठीक है जी. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.
अस्सलाम वालेकुम। सर हम लीव करें सर, ताकि रिकॉर्डिंग ऑफ करें सर। रिकॉर्डिंग तो भी दिया ना यार, किसको जा रही है रिकॉर्डिंग? करने लगी इच्छा तो हम्म? बस तो तलीफ है इसको तो कोई लगी उसामा लीव का उसामा